Hello everyone, this is a Sergeant program and today is day 197. And progress is quite stuck because some other works are going on in life, so I haven't getting that much time. So weekly 3135 we have solved. Let us try. Okay, this is it. Let us go, dosto. Number of valid clock lines. You are given a string of length 5 called representing representing the current time on a digital clock in form of wages earliest possible time 00 and the latest possible time is 23:59. In the string, it return like using must be replaced with digital on the line. Return integer answer the number of valid clock times that can be created by replacing every question mark with a digit. Okay. So in front, if it is okay. Okay, that we need to think. Then, so if you think, you can see if we have four places, if we have four places, suppose in here we can fill 0, 1 and 2. Okay, 0, 1 and 2 x. But for 2 to be here, we can we have to have something smaller than or equal to 3 here. Our question mark. Hmm. Okay.
Let us see what it looks like. Hmm. If -1 is there, we can replace this thing, isn't it? We should have some reference. रेफ should be like कि हम फर्स्ट क्या क्या डाल सकते हैं, मैक्स हम फर्स्ट जा सकते हैं 2 तक, मैक्स हम इसमें जा सकते हैं 9 तक, 0 से 9, मैक्स हम थर्ड में जा सकते हैं 0 से 9 अगेन, 0 से 9 पे जा सकते हैं, 6 तक ही जाएंगे ना, मार्क्स 5 तक ही जा सकते हो अगर अपन 59 तो बन रहा है मैक्स, तो 5 तक ही जा पाएंगे, यहाँ तक अपन मैक्स जा सकते हैं 9 तक, 0 से 9 तक, तो दिस इज रेफरेंस, ठीक है। गुड। So we know now -1 is can be replaceable. -1 can be replaceable. This -1 also, oh fuck. This -1 can also be replaceable. So to replace this -1, we will see the reference point. First can be at max 2. हमारे को एक 4 रिप्लेस करना ही पड़ेगा हमेशा। अगर -1 है 0, तो इसका मतलब मैं रिप्लेस कर पाऊंगा। अब मैं कितना रिप्लेस कर पाऊंगा? आगे पे डिफेंड करता, तो ये -1 है तो ही मैं चेंज कर पाऊंगा इसे, मेरे पास के माँ का भरोसा है, तब इसका अगर मैं इसे रिप्लेस कर पाऊंगा तो मैं आपसे बोलूंगा इफ टाइम array का 1, if it is not equals to -1 and टाइम array का 1 इक्वल्स टू अगर होता है, if it is smaller than equal to, तो हम सारे कब ले पाएंगे? जब ये smaller than equal to 3 होगा तब। बहुत बकचोदी नहीं है क्या ये? इतना हार्ड करने की जरूरत है कि नहीं? देखो
अगर टाइम है ना, अगर ये इक्वल्स टू माइनस है तो मैं चेंज कर पाऊंगा, अगर मैं चेंज करूंगा मेरे पास दो ऑप्शन। अब देख, इट कैन बी पॉसिबल कि मेरे पास i+1 हो, एंड i+1 अगर -1 होता है। तो रेफरेंस पॉइंट तो 0 1 2 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10। बेसिकली तो रेफरेंस पॉइंट तो आंसर होगा, सो इंट करंट इक्वल टू रेफ का वो तो होगा ही, है ना। अब देखो, इफ टाइम एरर का i+1, इफ i+1 इज देयर, if i+1 if it is smaller than or equal to, जो आगे का है, बहुत बच्चे दिखाए ये जरूरत है नहीं रही मेरे को पता है। भाई थिंक अबाउट आर्स की कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आर्स के 24 कॉम्बिनेशन है। वेट भाई मैं बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है इतनी। एच कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है क्या, तो सही। मिनट्स कॉम्बिनेशन एक है, मिनट की कितनी कॉम्बिनेशन, आर्स की कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। अभी देखो, इफ टाइम एरर का 0, इफ टाइम एरर का 0, इफ इट इक्वल्स टू -1, अगर ये करंट -1 है तो मैं उसकी रिप्लेस कर पाऊंगा इधर। अब क्या रिप्लेस कर पाऊंगा, सिंपल है, करंटली तो मैं रिप्लेस कर पाऊंगा कितने से, एच कॉम इंटू इक्वल्स टू होगा, या फिर एच कॉम और फिर करंट लगता हूँ, करंट करंट विल बी इक्वल्स टू, मैं क्या देख सकता हूँ, रेफ का 0 तो मैं ले ही सकता हूँ, इतने कॉम्बिनेशन है। पर इफ टाइम एरर का 1 इक्वल्स इक्वल्स इफ इट इज, अगर ये -1 है तो फिक्स करें, मेरे को वो कितना चाहिए होगा, -1, if it is not equals to -1, and then टाइम एरर का 1, if it is smaller than or equal to, अगर ये छोटा है, if it is greater than 3 से बड़ा है, then I know कि मेरा करंट माइनस माइनस हो जाएगा, बात खत्म। ये हो गया मेरा 0 के लिए, तो एच कॉम इंटू इक्वल्स टू करंट कर दूंगा मैं। वैसे मैं 1 के लिए देखूंगा, इफ टाइम एरर का 1 इफ इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे तो मैं सारे के सारे डाल सकता हूँ, सो एच कॉम इंटू इक्वल्स टू रेफ का 1, वो तो कर ही सकता हूँ मैं हर बार, वैसे सिंपल। इफ टाइम एरर का 2, 2 पे जो पड़ा है, इफ इट इज इक्वल टू, अगर ये -1 है तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इसमें कितने डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल दे भाई, दिक्कत क्या, 6 तो कुछ भी डाल सकते हैं ना यहाँ पे, आगे कुछ भी हो, तो 6 ऑप्शन इधर तो एम कॉम इंटू इक्वल्स टू रेफ ऑफ 2, अंडर ऐसे ही अगर ये -1 है तो इफ, इसका 2 आ रहा है, इसका 100 आ रहा है, इसका 1800 आ रहा है, 1400 1400 आना चाहिए था।
तो अगर ये माइनस में तो इसका रेट तो वन कितना है? तीन है, हाँ, 0 1 0 1 2 डाल सकते, तीन डाल सकता हूँ। फिर 10 उसका का मल्टीप्लिकेशन होगा ना। तो तीन मल्टीप्लाई किया है, फिर तो नीचे आया। तीन 30 कॉम्बिनेशन है, क्या 30 का बना ही रखते हैं, कितने डाल सकते हैं? कितने ऑप्शंस पॉसिबल है वो सोचना पड़ेगा मेरे को। हम्म। इसका मतलब अगर इनिशियली मेरे पास है 0 1 तो मैं डाल पाऊंगा सारे के सारे। पर जब 2 होगा तो 2 के लिए तो कम करने पड़ेंगे ना, या तो 2 के लिए कितने कॉम्बिनेशन होंगे वो भी तो सोचो ना। इंटरन 3 है तो मैं करंट माइनस माइनस करूंगा, इसका मतलब क्या मैं दो ही डाल पाऊंगा? मतलब कितने ऑप्शन माइनस है वो सोचो। 24 कॉम्बिनेशन मेरे पास थे। आर्थ का ही गेम है रे सारा, आर्थ का ही गेम है भाई। जीरो है तो जीरो आगे क्या आएगा, मैं जीरो से 9 तक आ सकता हूँ। 1 है तो 1 के लिए भी 0 से 9 तक आ सकता हूँ। 2 है तो 2 के लिए 0 से 3 तक ही जा सकता हूँ। So for 0 I have 10 options, 10 10 और 4 ऐसा है, 10 10 4। बेसिकली मेरे पास H कॉम्बिनेशन, R के कॉम्बिनेशन 24 होंगे इनिशियली, 24। अब यहाँ पे ये वाला सिस्टम 24 थे। अब मैंने कहा कि -1 भी नहीं है, एंड आगे अगर 3 से बड़ा है तो इसका मतलब 10 माइनस होंगे कॉम्बिनेशन, तो 14 बचेंगे।
इसका सही है हमने तो अभी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्वेश्चन है तो 6 कर दूंगा, अगर नहीं आगे क्वेश्चन हो 10 कर दूंगा, सिंपल। ये सही है, टाइम आवर्स में लिख करे अब। सेकंड पे क्वेश्चन मार्क है, सेकंड पोजीशन पर आवर्स के भी, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? आई तुझा मोबाईल तुझ्याकडे घेऊन जा ना. आई, तुझा मोबाईल तुझ्याकडे घेऊन जा. मोबाईल तुझ्याकडे घे ना. मैं सोच के नहीं पा रहा, मेरा दिमाग क्यों बंद पड़ गया है इतना सिंपल सवाल पे, या फिर मैं ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ यार. पहला क्वेश्चन मार्क है, दोनों क्वेश्चन मार्क है, तो 24 कॉम्बिनेशन है, सिंपल. दोनों -1 है. एंड एच कॉम्ब इक्वल्स टू 0, तो कितने हैं? 24 कॉम्बिनेशन है हमारे पास, सिंपल. 24. अब देखो, इफ टाइम एरर का 0, इफ इट इज इक्वल्स -1, एंड टाइम एरर का 1, इफ इट इज, अब देखो ये माइनस में, तो इधर में तो कुछ भी डाल सकता हूँ, पर अगर आगे वाला, जो आगे वाला माइनस में तो होगा नहीं, ऊपर दिखता. पर इफ इट इज ग्रेटर देन 3 है, देन एच कॉम विल बी इक्वल्स टू, एक 0 डाल सकते हो या फिर 1 डाल सकते हो, सो 2 है. एल्स इफ, यहाँ पे डालना पड़ेगा. एल्स इफ टाइम एरर का 0, इफ इट इज इक्वल्स टू -1, एंड देन टाइम एरर का 1, इफ इट इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3, देन एच कॉम विल बी इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 हो सकते हैं. अब क्या हो सकता है? अब ये भी नहीं है दोनों के, दूसरा माइनस होगा, तो एल्स में दूसरा माइनस होगा, इसका मतलब मैं उधर तो 10 कॉम्बिनेशन डाल सकता हूँ, तो एच कॉम इक्वल्स टू 10. 10 तो डाल ही सकता हूँ ना, हर बार डाल सकता हूँ क्या? इसमें भी कैसे? तो इसमें 10, अगर इसमें 2 है तो उसमें 10 नहीं डाल सकता, समझ रहे हो? So if time error का 0, if it is smaller than, if it is, यार ये 3 से नीचे तो मैं सारे डाल सकता हूँ. So if it is smaller than or equal to, सेकंड में डालना है मेरे को, सेकंड में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अगर करंट 2 होता, तो मैं सेकंड में 2 ही कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ, 3 कॉम्बिनेशन 0 1 2 डाल सकता हूँ.
So if it is equals to 2, what is equal to then h com इक्वल्स टू कितने 0 1 या फिर 2 या फिर 3 चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसे else hcom will be equals to 10 बहुत ही वक्त लिया मैंने कंपाइलर रे रा रे रा 200 1400 मत कर अभी टाइम नहीं है बकचोदी बहुत कर ली मैंने इसमें इसमें भी रॉन्ग आंसर आएगा तो बहुत बुरा लगेगा ठीक है लेट अस सी भाई जो होगा देखा जाएगा मैंने जो पता ही था मेरे को। इसमें क्वेश्चन मार्क है आंसर आना चाहिए 6 एक्सपेक्टेड है और पूरा 60 कैसे अच्छा मैं एल्स में डाल रहा हूँ ना एल्स में बस नहीं डाल सकता मैं इस दोनों भी इस दोनों है मतलब अगर ये कब 10 कब करने वाला था मैं अगर ये दो होता तो मैं कर लेता पर if it is smaller than 2 if it is strictly smaller than 2 and टाइम ARR का 1 equals to -1 then I can else एक ही बन सकता है how this will work and there are से बोलते भाई इजी क्वेश्चन में मुक्तरी बना अब मेरे को थोड़ा दिमाग की माँ में निप करना था जो इतना स्लो नहीं चल सकता मेरा दिमाग यार कीप डूइंग इट ऑल द बेस्ट हाँ भाई वही कर रहा है अभी सिलेक्ट स्ट्रीम हुआ नहीं क्या अरेंज प्रोडक्ट क्वेरी भाई साहब given a positive integer n there exists zero index array called powers composed of the minimum number of powers of 2 that sum to n okay that sum to n the array is sorted in non-decreasing मतलब increasing order and there is only one way to form the array you are also given you are also given zero index 2D integer array queries where queries of I is left of I, right of I. Each value of I represent the query where you have to find the product of powers of j with left of I is smaller than equal to j smaller than equal to right of I. Return array answer equals to length of queries where answer of I is the answer of the ith query since return the answer of I should be modulo 10 raised to 9 plus 7 क्वेश्चन का मतलब क्या बनता है इस
अच्छा 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 अच्छा। अगर एक मेरे को दिया होता 17, तो मेरा पावर एरर क्या बनता? 17 कैसे दिखता है? 16 0 0 0 1। सो दिस इज 1 2 4 8 and 16, 16 plus 6 17. So I have only 16 and 1. So basically I have two things. 1 and 16 only there. Okay, for 17. Just like that, for 15, we have all the set. Then the power array will look like 2, 4 and 8, and I want 0 से 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, 2 से 0, 2 से 2 तक का मल्टीप्लिकेशन, वैसे 0 से 3 तक का मल्टीप्लिकेशन। ओके ओके। और जो लेंसेज छोटे होंगे तो पता ही है। ठीक है। Now we need to only find product। अगर मैं मॉड्यूलर प्रोडक्ट लेके रखूँ सबका, जैसे 1 1 2 24, 14 8 64। अब मेरे को दो से डिवाइड करना है। क्या था वो, जैसे कि दो से दो बोला है, सो दो से दो बनता है 8, 8 और दो माइनस में दो, मेरा दो तो 4 बनता है। अब इसे मॉड्यूलर में कैसे करते हैं? लेट अस आस्क चैट जीपीटी, ये सीख ही लेता हूँ मॉड्यूलर इनवर्स। बहुत दिन से। थैंक्स। क्या है? लिंक बेस थैंक्स। और सॉरी ब्रो। जेनजी कैन यू कोलैब विद मी? यार मेरा चैनल का 2 रुपए का सब्सक्राइबर हो, तुम्हारे साथ कोलैब करो? अरे भाई इधर कोई है नहीं। मेरे को सबसे पहले तो एक्सप्लेन हाउ टू डू मॉड्यूलो operations operations on divisions explain करेगा। basic, when you divide two numbers equals to q into quotient plus r remainder, quotient plus remainder होता है। The modular operation basically a mod b equals to r, so remainder. The simplest example, 10 mod 3 will be equals to 1, because 10 will be equals to 3 into 3 plus 1. So remainder is here and 3 into 3 plus 1. 17, 6 into 5. Okay. Step by step method. Compute a mod b, divide a by b, take integer part. क्या बोल रहा है भाई? If a mod b equals to a minus b into a divided by floor. If I have array of integer and I have one more array that contains cumulative product of each element in array. Now I want to find
find a range product, but the problem is I have done A into B mod kind of operation while calculating cumulative product array. अब ये बोलेगा कुछ कुछ वो हमें समझना है. Ah, you are touching a classic problem of modular arithmetic. This comes up a lot in a competitive programming. Let's restate your situation clearly. You have array A, you built a prefix product array, yes. Mod, yes. Product name, yes. The problem. Normally, without modulo, you would do range product PR divided by L minus 1. But with modulo, P of I will be equals to previous into P of I, product of I equals to previous into A of I mod. Nice. So division is not straightforward anymore. The correct approach, modular inverse. Instead of division, you use modular inverse. A range product, suppose not product, suppose P product of R into product of L minus 1 inverse mod. What is modular inverse? A number x raised to minus 1 is the modular inverse of x if x into x minus 1 equals to 1. Mod. When does this work? This works only if mod is prime. Mod is prime. P L minus 1 not equals to 0. How to compute modular inverse? अरे यार माइनस वन जीरो भी हो सकता है ना भाई मॉड्यूलो पर प्राइम का तो क्या ही मॉड्यूलो है खुद नंबर बनेगा तब. हम्म. How to compute modular inverse? If mod is prime, the Fermat-Liter theorem. X inverse congruent to x mod minus 2 mod. So product range product will be equals to product of R into product of L minus 1 mod minus 2. That is 2 mod minus 2 mod mod. ये सब तो सही है. सब एक ही तो बन रहा है अभी दिमाग में ना. पर ये दो के दिए इसका मतलब वो भी तो है इसका मतलब ये छोटा भी हो सकता है. हाँ अलग भी सोचो ना इतना हार्ड क्यों सोच रहे हो. यार सारे क्वेरीज को भी अगर मैं अलग अलग करूं तो वो छोटा ही तो बनेगा. नहीं जो दिक्कत क्या है. नहीं समझे नहीं क्या रुक समझाता हूँ. यार तुम समझो इतनी जरूरत है नहीं मॉडल इनवर्स इनवर्स की. अब देखो 10⁻⁹ बोला है ना उन्होंने. n will be equals to more than equal to 10⁻⁹. अब 10⁻⁹ को अगर मैं लॉग करूं यानी कि कितने नंबर लिखे लगेंगे कितने आ सकते हैं सो 10⁻⁹ करूंगा मैं. So we almost have 32 raised to powers. Okay, 32 raised to powers. Worst case 30. And if 32 raised to powers, so 30 का array मिलेगा हमें. So हर क्वेरी के लिए हम यहाँ से चालू करेंगे यहाँ तक एंड करेंगे बात खत्म. दिक्कत क्या है भैया. कोई दिक्कत नहीं है ये तो बकचोदी हो गई फिर. और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. नंबर ऑफ क्वेरीज. सो हाउ मेनी क्वेरीज आर देयर 10⁻⁵. 10⁻⁵ इंटू एरे की साइज कितनी 30. सो 30 इंटू 10⁻⁵ तो चल जाएगा. दैट्स व्हाट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी helps brother. That's where time complexity helps.
मेकिंग बेस्ट प्रोजेक्ट एवर इन गिटहब इन नेक्स्ट ईयर। बनाओ भाई, मैं डेवलपर नहीं हूँ। अब इसे करूंगा वैसे। सबसे पहले तो मेरे को चाहिए 2 raised to power सारी लेके आनी पड़ेंगी। हाउ? देखो n है ना, सो n के हर वेक्टर ऑफ पाउस बनाएंगे अपन, और फॉर इंटा इक्वल्स टू 0 स्मॉल देन बनेंगे 30 तक i प्लस प्लस। अब n टेंड्स टू 9 तो यह 30 तक जाएंगे अपन, या फिर 30 को भी इंक्लूड कर ले, 30 तक जाएंगे, है ना। सो इफ, अगर मैं वन n को, या फिर वन को i टाइम्स आगे लेके जाऊं, एंड करूं, n के साथ, अगर ये कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देता है, देन मेरे को पावर में डालना पड़ेगा कुछ। सो पावर्स डॉट पुश बैक, इसको मैं सीधा ऐसे भी कर सकता हूँ, वन को आई टाइम करके 0 तो पावर जाएंगे सारे के सारे। अब ये उल्टी आ सकती है ना भैया, तो 30 से चालू कर सकते हैं हम कि 30 के बाद सबसे बड़ी पावर सबसे पहले जाएगी इसका, तो इसके अंदर तो दिक्कत कोई नहीं है। सो अगर रिटर्न में अभी पाव करूँ, will this return what we want? Let's see. Yes, it actually returning what we want to and this. So simple. Now go through the queries. So vector of int answer. And one thing we need is int mod equals to 1. This is integer 1e9 plus 7. What can we do? For auto q in q u e r i e s queries. हम हर क्वेरी के लिए हमें स्टार्ट से एंड तक जाना है। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू क्वेरी का 0, आई स्मॉलर देन इक्वल टू क्वेरी का 1, एंड देन आई प्लस प्लस है, मल्टीप्लिकेशन करना है ना। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन विल बी, यहाँ पे इंट mul विल बी इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन चालू करेंगे। सो mul इक्वल्स टू mul मॉड मॉड इनटू 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 क्या करेंगे अपन, इनटू जे पाउस का आई मॉड मॉड, तो ये पूरा होने के बाद भी मॉड मॉड। दैट्स हाउ द मल्टीप्लिकेशन इज डन। एंड एट द एंड हमें आंसर डॉट पुश बैक करना है mul, बात खत्म। एंड देन रिटर्न द आंसर। How this work? Because the time complexity analysis is good. So now it is showing. So why not just convert it to the long for now? So this will convert this to long. Now this number again, will be into 1ll. Now this will be the long. This should again help, I guess, so work, because now it is long should work. Yes. So it is about long. Okay. Two question, two wrong answers. Good. Minimize minimum of array. Minimize minimum of array. Minimize maximum of array. Okay, you are given zero indexed array nums. क्या है ये? Nums comparising ये क्या होता है इसका मतलब? Comprising comprising of n non comprising event. Comprising of n non-negative integers. In one operation, you must choose an integer I such that 1 is smaller than equal to I smaller than n. Okay, n is non-negative integer, and nums of I should be greater than 0. Decrement nums of I by 1, increment nums of I minus 1 by 1. एक को कम करो, एक को बढ़ाओ, ठीक है।
return the minimum possible value of the maximum integer of nums after performing any number of operations. Okay, so what they have said is suppose this is our array. Suppose this is our array. If we choose this as I, then we can decrement this and increase this. So we can increase this and decrease this. So if I chosen, we have to decrease this, and I minus 1 will be increased by 1. This is decreased by minus 1. That is very important. Ah, भी ना जाओ छोड़कर मिनिमाइज मैक्सिमम। तो अगर ये अरे 3 7, सॉरी 3 7 1 और 6 था, अब मेरा मैक्सिमम है 7, तो मुझे इसे कम करना है। नाउ टू डिक्रीज दिस आई हैव टू इंक्रीज दिस। तो मैं इसे 4 कर सकता हूँ, इसे इसे क्या कर सकता हूँ, इसे 7 से 6 बना सकता हूँ, इसे भी 6 बना सकता हूँ, 1 से 6, तो 6 भी मैक्सिमम बन सकता है। ठीक है। अब मेरे को अगर 5 बनाना होता so how can I make this as a 5? I को पकड़ो, इसके छोटे करो, इसको बढ़ाओ। अगर मैं वैसे बोलता कि मेरे को 5 आंसर बनाना है, सो आई नो कि आई कैन, सपोज मेरा 5 आंसर बनना है मैक्स, तो मैं यहाँ पे 2 इंक्रीज कर सकता हूँ यहाँ पे। सो मेरे को आगे के लिए लेवरेज होगा कि आई कैन इंक्रीज 2। 2 आई कैन इंक्रीज, सो 2 लेके चला, अब 7 है। अब 7 में से भी मेरे को 5 ऊपर 2 है, तो मेरे को 2 तो घटाना ही पड़ेंगे। मेरे को पीछे देखना पड़ेगा, कैन आई डिक्रीज 2। सो ये बोलेगा कि हाँ, सो ये बनेंगे 5। अब मेरे पास कुछ लेवरेज नहीं है, एक पे देखूंगा तो मेरे पास 4 का लेवरेज पड़ा होगा। अब 6 को मेरे को 5 बनाना है, तो एक डिक्रीज करना पड़ेगा, तो एक डिक्रीज करूंगा, 6 से कितने बनेंगे, 5। मतलब एक के 2 बन जाएंगे बाय डिफॉल्ट, और मेरे पास 3 का लेवरेज पड़ा होगा। ओके, दैट इज गुड। सो मैं बोलूंगा कि भाई 5 तो नहीं बनाना है मेरे, मैं बोलता हूँ 4 बना सकता हूँ, क्या देखो 4 के लिए एक का लेवरेज पड़ा है। 7 बोलेगा भाई 7 में मेरे को 4 बनाने के लिए 3 घटाना पड़ेगा, 3 घटा ही नहीं सकता, दैट्स वेयर वी रिटर्न। सो दिस इज बेसिकली a classic binary search question. Okay, let us try to implement this binary search and answer. The minimum that we can make is 1। हम समझ 0 से भी चालू हो सकता है भाई, सो 0 भी बना सकते हैं अपन। So int answer will be equals to, या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, int low will be equals to 0 and HIGH maximum will be equals to max. So max can be 1 in 9 1 in 9। अब while low is more than equal to HIGH, हमें क्या करना है, हमें int mid ढूंढना है। तो int mid will be equals to low plus HIGH divided by 2। Now we will check, can we make mid as answer? So check mid comma nums. If we can, then why not just minimize that? So why not just minimize? Then high will be equals to min, will be equals to mid minus 1. Else low will be equals to mid plus 1. And if we are minimizing,
the answer like minimum maximum, the answer will be low. Low, yes, return low. Maybe, may not be. And now we have to write check function, and in binary search, always check functions are very important. So Boolean check. In check, we have mid and vector of int address of nums. सो प्रिंट रू तो करना ही पड़ेगा अब हमें चाहिए int leverage और int points we have suppose 0 then for int I equals to 0 I is smaller than an I plus plus and the simple thing if if I if I if I अगर I present है तो would be greater than or if it is smaller than mid equal भी होगा तो चलो if it is smaller than mid then return false नहीं तो फिर I है तो कुछ करना पड़ेगा अगर I नहीं तो simply पॉइंट्स प्लस इक्वल्स टू कर दूंगा मैं पॉइंट्स प्लस इक्वल्स टू क्या होगा मिड मेरा छोटा ही होगा इसका मतलब तो नम्स ऑफ जीरो माइनस मिड है ना अब यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं सो इफ nums of I if it is already smaller than or equal to mid then what we will do points plus equals to nums of I is smaller than or equal to mid तो मिड है तो मैं बड़ा कुछ डाल सकता हूँ ना इसके अंदर यहाँ पे ये मिड होगा भाई मिड बड़ा होगा सो यही तो पॉइंट बनेंगे अपने पास और अगर नम्स ऑफ आई स्मॉलर देन मिड हाँ नम्स ऑफ आई ऑलरेडी स्मॉलर देन है ग्रेटर देन मिड होगा तो क्या तो इसी को भी हटा नहीं सकेगा ना हाँ सही है ये अगर मिड से बड़ा है तो हक देगा तो जो करंट है उसे हम डिक्रीज कर सकते हैं और माइनस वन को तो करंट को डिक्रीज कर सकते हैं अपन पर फर्स्ट को कभी डिक्रीज कर पाएंगे नहीं तो अगर वो मिड से बड़ा होगा तो रिटर्न फॉल्स है नहीं तो पॉइंट्स के लिए अब वो मिड से छोटा ही होगा या फिर इक्वल होगा तो नम्स ऑफ आई अब यहाँ पे देखते हैं अगर नम्स ऑफ आई स्मॉलर देन मिड ऑलरेडी स्मॉलर देन इक्वल टू मिड है तो हम क्या करेंगे प्लस इक्वल्स टू क्या करेंगे बेसिकली मिड माइनस नम्स ऑफ आई तो प्लस कर देंगे ये पॉइंट्स अब एल्स इसका मतलब जो नम्स ऑफ आई वो बड़ा है सो हम निकालेंगे रिक्वायरमेंट सो इंटर रिक्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या होगा रिक्वायरमेंट विल बी इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई जो भी नम्स ऑफ आई माइनस माइनस मिड तो nums of I minus mid करेगा तो एक रिक्वायरमेंट लेंगे एंड if points is greater than or equal to requirement then we can simply say points minus equals to requirement else return false that is the good this is basically nums dot size so this is giving us a 5 which is correct and this is giving us a 10 which is correct and I guess क्या होता है correct ही होना चाहिए था पर हम हक दिए कहीं पे तो कहाँ पे हक दिए पता नहीं क्या बोल रहा है क्या जरूरत है पर अच्छा इसे लॉन्ग लॉन्ग कर दे भाई मैं हर किसी में एक एक बार हगाऊं क्या बकचोदी है दिस इज करेक्ट सोल्यूशन इसे अब मैं ऑप्टिमाइजली लिख सकता हूँ क्या चैट जीपीटी पूछते हैं सही था मतलब तीन सॉल्व करे तो सही है योर solution is already using binary search plus feasibility check but check can be simplified and made more efficient right now point transfer which works is necessarily complex तो optimization क्या बोल रहा है
क्या नहीं ये क्या है भाई दिस वर you only move value left. So each prefix 0 time must fit under mid. That means sum of I sum should be smaller than or equal to I plus 1 into mid. Mid should be greater than or equal to sum divided by I plus 1. भाई साहब ये भी ऐसे भी होता है कुछ बाइनरी सर्चेज ओके बट दिस इज खतरनाक हो गया भाई इसका इन्होंने क्या किया सम बोल रहा है कि अगर मेरे को ये है और मैं भाई लेफ्ट कर सकता हूँ वैल्यू there is an undirected tree with n nodes labeled from where to where Ra, re, ra, re, ra, re, e, 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 e. Ah, undirected tree with n nodes labeled from 0 to n minus 1. You are given zero indexed integer array nums of length n where nums of I represents the value of the ith node. अच्छा, node. You are also given an 2D integer array edges of length n minus 1 where edges of I, j of I, b of I indicate that there is edge between I of and b of I in the tree. You are allowed to delete some edges, splitting the tree into multiple connected component. Let the value of component be the sum of all nums of I, which node I in the component. अच्छा. Return the maximum number of edges you can delete such that every component in the tree has same value. Same value. You can delete an edge बोला है ना दारा रे रा रे रो
मेरा हौसला भी अय्याश है, ये तो कारवां की तलाश है ना तुम। अरे अरे रा रे रा। 22266। धीरा 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 धीरा। 666। ब्रूट फोर्स अप्रोच तो ये होगा ना, सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस देखोगे, सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या? इन दोनों कर सकता हूँ क्या? इन दोनों कर सकता हूँ क्या? फिर इन दोनों कर सकता हूँ क्या? इन तीनों कर सकता हूँ क्या? फिर इन चारों कर सकता हूँ क्या? फिर सारे चार चेक कर दो। एट द एंड जाके तुम देखोगे उस कंपोनेंट को कैलकुलेट करो कि भाई ये वाले कंपाउंड उसमें जा रहे हैं, ये वाले इसका सम, फिर इसका सम। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी भाई बहुत, बट क्या।
बारह भी रा रे रा। यार मैं स्टॉप करता हूँ भाई, क्या ही रैंक होगी, बेंच रैंक की कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे दिमाग में। 13 not that good. Stop this fucking contest. Let us see. इसकी अप्रोच मेरे को उल्टी लग रही है, उल्टी मतलब consider all divisors of the sum of the values. तगड़ा है रे, इसको सॉल्व करना है मेरे को। तो इससे जरा मैं, ठीक है भैया लोग, बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय।